Vishal, you are mute. You are mute. Yeah. I mean, you are not audible. Your mic is off. Okay. Okay. Thank you. Thanks, Faraj. So, hi Welcome. everyone. This is Vishal from Cypher School. I hope you all are doing well. So, the agenda for today's session is to understand portfolio building with the help of various AI tools, right? So, to conduct this session, we have Swaraj Anand with us, one of our mentor and SDE at Cypher School. So, hi Swaraj, welcome to the session. So, could you Thank please introduce yourself to the students? Hi, everyone. My name is Saraj. Currently, I'm working with Cypher Schools as a software dev as well as mentors. I guess many of you already know me that. I mean, know me, what I'm do, what I teach. I guess so. Let's hope for a great session. Yeah. So Yeah. thank you so much for quick intro. We can start now. Like it's over to you. Thank you, Vishal. Thank you. So, just give me one second. Let Sure. me share my stuff. Then we can start. Okay. Vishal, can you confirm? Is my screen visible to you? Not right now, Swaraj. Just a second. Okay. I guess it is now. No? Yes, it is now visible. You can start now. Okay. Cool. So, are we live? Am I audible now? Shall I start? Or let me wait for 1 more minute, 1 or 2 minutes. Let everyone join. Then we can start. Let me see how many guys are seeing us. So I guess just let me give me 1 minute. Uh, okay, I guess guys are starting to join. Okay. Okay, cool. I guess we can start. So yeah. So hi everyone. My name is Farah. Hello everyone. So today we'll start with a simple session related to the what related to how we can build a portfolio. How we can build a portfolio. Let me shift to the comment side. Okay. Okay, guys. Tell me one more thing. Shall I continue in English or shall I shift to Hindi? It's up to you. If you want me to continue in English, then I can. I mean, stick to that. Otherwise, I can start. I mean, start in Hindi. It's up to you. Chat everyone. Good evening, everyone. Good evening, Harshit. Okay, Hindi. Ranchu Kumar. This too shall pass. Great, Ranchu. Okay, I guess we can. Okay, so what I'm thinking. English. Okay, cool. This should work. We'll continue in English. Okay. Good evening, guys. Okay, cool. We'll continue in both of them. So, okay. So one thing, everyone, please tell me, what is a simple use case? Why we need a resume first? Resume and why we need a what portfolio? Any one of you know that? What is a simple use case of resume and portfolio? Quick in the chat, everyone. I'm waiting for your responses. किसी को idea है भाई बताओ? Why we need portfolio and why we need resumes? What is the benefit of portfolio? Suppose if I'm having a simple portfolio or any kind of portfolio, so what is the benefit of that portfolio? Anyone? Any idea? Everyone waiting in the chat box.
I guess if you don't have any kind of idea, please say no or whatever you want. Stick to zero. Didn't have idea. And if you're having some kind of idea, go ahead, tell me. Okay, it built credibility. Okay, great. Great, Harshit. B4X. Okay. Anyone else? Okay, no. Okay, no worries. Cool. So, okay. So what portfolio do? Let me show. Just give me 1 second. Let me show a simple portfolio. Let me give a simple example. What we are building. First, then we'll start with the simple idea. How we can build that. एक मिनट दे दो मेरे को बस. Let me log in that. What I'm trying to show you, a simple portfolio, what I've made with the simple lovable. So I guess this should work. Okay, guys. Yes, my screen is still visible, ना? भाई, everyone बताओ. Screen दिख रही है आप लोगों को? Okay, cool. I guess it is. So see, what I have done, I've created a simple portfolio. This is a portfolio I've created with the help of AI. Just a simple lovable. There is one AI, platform which can build end-to-end website, web apps, web applications, multiple things, whatever you want. It's up to you. You just have to give the simple context, and after that, it should work. So what I've done, just simple web page, just a simple web page. See for yourself. And I haven't written a single piece of code. Think about it, no? I haven't written a single piece of code, not even a single line. And the whole website is fully responsive. I can click each and every word. I can click each and every panels. It should work. The website is responsive also. If you want, I can show that to you. So if you want, I can show that to you. The website is responsible itself. So you can see it's quite responsible for the mobile screens also. So if I tell you, I have just created the whole stuff with the help of just some kind of prompts and one web app. Is it that good? See, cool, huh? I guess cool is it. Okay. Okay. So now what we are doing, is it cool? First tell me that. I guess cool, no? The whole web page. And think for yourself, na? The whole stuff we have just created with the one single kind of prompt. Just a detailed prompt. Not just a single prompt. We have to just explain. We have to give the context what we are trying to build. So after that, the whole AI is going to work for you. Okay, I guess cool. So we will start with the idea. So first we're going to start with the whiteboard. So I'm going to first show you the expectations, what you are expecting from this session. So let me add the expectations. A basic idea, the expectations are basic idea about of prompts. Build app with AI. Host web apps. And the basic of connectors. So this is quite the expectations. You have to, you can see that what we are doing inside this session. So there's a 4 pointers, and we just revolve whole around these 4 pointers. They're the pointers. तो अपन इनके आजू बाजू ही रहेंगे, ठीक है, मेजरली जो मेरे को assumptions लग रहे हैं, ठीक है. So first thing, portfolio मैंने आपको assumption दे दिया. What is the simple idea about portfolios? ठीक है. Now suppose, let me just move back to the portfolio. So right now, see, the portfolio which we are having is having what? The about section. So let me get back.
So first, there's a simple homepage. Inside a homepage, we are having two portions. The one, my name, and the basic aim, and just a simple detail. What I do, what kind of developer I am, और क्या करता हूँ, कितने साल के एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोजेक्ट्स मैंने क्या क्या करे हैं, सिंपल assumptions. Nothing बल्कि just a simple assumptions. इसके अलावा कुछ भी नहीं. Next to that, we have my about sections. तो मैंने क्या करा है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, experiences, how many clients I have served on. Next to the part, I have skills portion. Next, the project one, and the experiences. And last portion is the contact. I mean, so if someone wants me to contact, how he or she can contact me. So there are the session. There are the sections we are trying to build in the live. And yeah, one interesting stuff, we have the day and the night mode. So yeah. So for the sections, so inside our about section, we are having a simple name and a basic detail and two kind of two buttons. So suppose if we just move with that specific part, first we'll break out the portfolio inside our sections. So it should be, we are having about the home page, the experience or skill, experiences, the skills, and what, the socials slash contact. Okay, so they are the portion your portfolio is going to hold. ये portion आपके portfolio में majorly exist होनी चाहिए. It should have a home page. It should have about experiences, skills, and socials. Okay. Good evening, everyone. Good evening, guys. Crazy, Keshav. Cloud, Senator. No, Junaid. We'll start with the Lovable, not with Cloud. Okay, Monu Kumar Geo. Okay. Looks interesting. Hi, Amit Patak. Great, yeah. Cool. We can start. Sorry, we can. So, see, we'll first differentiate between the simple prompt and a detailed prompt. We'll first differentiate between a simple prompt and a detailed prompt. Suppose, take a simple example. We have two persons, person A and person B. देखो अभी के लिए नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्रेशन होते क्या हैं, बट वी हैव अ सिंपल प्रॉम्प्ट एंड द डिटेल प्रॉम्प्ट. सपोज वी हैव टू पर्सन, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ठीक है, तो अभी के लिए सपोज करो अगर आपके पास, ठीक है, दे बोथ हैविंग अ सिंपल टास्क. दे हैव टू क्रिएट अ सिंपल कॉफी. दे हैव टू क्रिएट अ सिंपल कॉफी और टी, व्हाटएवर यू वांट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. अगर आपको टी पसंद तो टी, अदरवाइज कॉफी. ठीक है, दे हैव अ सिंपल टास्क. दे हैव टू क्रिएट अ कॉफी, अदरवाइज टी. ठीक है, सो फॉर द सिंपल प्रॉम्प्ट, so how normally we use chat GPT, Claude, जो भी आप use करते हो, Lovell, any other stuff, how we can give a simple prompt, normal persons, how we can give, how we are giving a prompt कि भाई ठीक है, so what we have to do, just create me a coffee, just create me a tea slash coffee. ठीक है, this is just a simple prompt. So right now for this prompt we have a simple issue. देखो अभी के लिए इस prompt में issues क्या क्या है. देखो नॉर्मल एग्जांपल्स फॉर्मेट में समझा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, द सिंपल इशू इज दैट we don't have any context. The context is missing. So context are how much milk, the quantity, sugar intake. Suppose करो अभी without any, just a simple prompt में issues क्या क्या हैं. मिल्क कितने कप्स होने चाहिए, शुगर इंटेक्स क्या होंगे आपके, टी लीव्स क्या होंगे, किस टाइप के टी लीव्स पुश करने होंगे आपके. ठीक है, so just वी आर मिसिंग विद द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो जब आप सेम प्रॉम्प्ट अगर आप किसी एआई को फीड अप करोगे, ठीक है, तो जस्ट क्रिएट अ सिंपल काइंड ऑफ बोरिंग इश्यूज, नॉर्मल जो भी एकदम बेकार सा पेज बना के देगा अभी आपको. क्योंकि क्या इश्यूज है, द मेजर इशू वी आर हैविंग इज द कॉन्टेक्स्ट मिसिंग पार्ट है. ठीक है, so but this isn't the case with the detailed prompt. So what we are having is a detailed prompt. Suppose for same scenario, person B have to create a key, tea or coffee with a detailed instruction. So first instruction will pass a what. So right now, the person who is trying to make a tea or coffee, it is a chef.
So think like a chef. First we'll pass. Think like a chef. Next prompt. We have to define what is the quantity and quality, what we want, I mean, what we are expecting from the what coffee. This is regarding the context side. Context में expect क्या करना है ये बता रहा मैं आपको, ठीक है. So अभी के लिए for the detailed portions, what we'll explain that one by half cup of what cup of milk only. Next what 2 spoons sugar, half spoon leaf. कैसी दिख रहा है आपको? If you try to compare each and every one, both the prompts, ठीक है. देखो एक बार आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देखो. इश्यूज क्या क्या है? एक सिंपल प्रॉम्प्ट है कि भाई ठीक है, जस्ट गो एंड क्रिएट अ सिंपल टी, ट्राई टू क्रिएट अ सिंपल टी, ठीक है. इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है भाई, क्या बनाना है, कितनी देर पकाना है, कुछ भी आइडिया नहीं है अभी, ठीक है. मेजर इशू नहीं है आपके पास. बट फॉर द डिटेल वन, वी आर पासिंग क्या, आप क्या क्या पास कर रहे हो अभी के लिए. वी आर पासिंग ठीक है, राइट नाउ वी आर द शेफ. थिंक लाइक अ शेफ कि भाई अभी जो एआई है वो थिंक लाइक अ शेफ. यू हैव टू क्रिएट अ व्हाट कॉफी स्लैश टी. क्या पास कर रहे हो आप कि ठीक भाई अभी जो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, यू हैव टू पुट व्हाट हाफ कप ऑफ मिल्क. जो आप टी बनाओगे उसमें हाफ कप मिल्क होना चाहिए, 2 स्पून शुगर होने चाहिए, हाफ स्पून आपके क्या लीफ होने चाहिए. तो अभी के लिए आपने क्या करा, जो प्रॉम्प्ट दिया है आपने, जब टास्क आपको क्रिएट कराना है आपके एआई से, ठीक है, आपने क्या करा, एकदम डिटेल प्रॉम्प्ट पास ऑन करा, ठीक है. तो जो आउटपुट्स होंगे क्वाइट डिफरेंट होंगे. अभी जो आपके आउटपुट्स मिलेंगे रिलेटेड टू डिटेल फॉर्मेट, जो आपने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है उससे बहुत डिसेंट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट दिया उसको कि भाई आपको किस वे में थिंक करना है. जो आपका एआई होगा, एआई कुछ चीजें आती हैं, द सिंपल वन इज द सेम एआई एंड द डिटेल वन इज हैविंग द सेम ब्रेन. दे बोथ हैविंग द सेम ब्रेन. सिंपल वाला भी सेम ही एआई है आपका, डिटेल वाला भी सेम ही आई है. बस काम क्या है, एक को आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, एक को आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया अलग था, ठीक है. तो आउटपुट्स क्वाइट डिफरेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है. तो ये आपके जनरल इश्यूज होते हैं आपके रिलेटेड टू द व्हाट related to the detailed prompt. So now we'll try to create our own prompts regarding the what related to any kind of portfolio, how we can create a portfolio with a detailed prompt. ठीक है, start करें भाई एवरीवन. इज दिस पार्ट क्लियर टिल नाउ एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है आपको क्लास भाई एवरीवन? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस. ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है. ओके ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट राजेश, ग्रेट फन फैक्ट 12. ओके ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट lovely, cool. Now we'll try to create our own prompt with the help of what first thing. I will leave it. First thing, abhi ke liye we have to just define. So for the first portion, we'll just write a portfolio. ठीक है, there's a title. So first thing we have to define what right now you are the AI. So you have to define what you are the AI. You have to think like. Let me zoom it out a little bit, I guess. You have to think like a software dev and UI engineer. Okay, first thing what we have done, define. तो ये पहला प्रॉम्प्ट अपन ने एक्सप्लेन करा उसको, ठीक है, रिलेटेड टू द क्लाउड साइड, मतलब रिलेटेड टू द एआई साइड. तो अभी जो आपको टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको किस हिसाब से थिंक करना है. यू हैव टू थिंक लाइक अ सॉफ्टवेयर डेव एंड अ यूआई इंजीनियर. फॉर द मोर डिटेल पार्ट वी कैन डिफाइन व्हाट इट शुड बी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सीनियर यूआई इंजीनियर. ठीक है, देखो वी आर जस्ट चेंजिंग अ माइनर ट्विक्स. अपन ने बहुत माइनर ट्विक करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और बहुत चीजें डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है आपको, ठीक है. फर्स्ट हैव टू डिफाइन द पैनल्स. सो आवर पोर्टफोलियो should have how many portions? Let me check. So what we're trying to create, it should have home, about, experience, skill and social contact. So it should be what it should have home page, home section,
home, about, experience, skills, and what? Socials. Not this one. Where is my book? Socials. I guess anything more. Okay, and contacts. Okay. So now we have just defined the section part. Now we have to define what should the color theme. So for the theme part, I have a website name as Era of Color. It will show you a color panel. So if you want, I can select by myself or it's up to you. Okay, let me do it by myself. So we'll try to create our simple portfolio aesthetic. The board decent try करते हैं अपन बनाने का, ठीक है? Let the color formats also, ठीक है? So for the color combination, let me think for something. Okay, this should look nice. Okay, let me copy the colors from here. For the colors, use this palette. This one. Next, this one. Okay, this one's great. Okay, and some other color. We'll introduce black also for the borders and headline. Black. So for the color portions, what to define? We have given 5 major colors and stick to the color format. Stick to the color options. Don't use unnecessary colors. ठीक है? तो अभी के लिए डिफाइन करा हम लोगों ने, ठीक है? कलर पोर्शन में क्या क्या डिफाइन करा कि ठीक है, वी हैव गिवन 5 मेजर कलर्स कि ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो अराउंड दीस कलर्स कि अभी जो पोर्टफोलियो अपन बनाए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इन 4-5 कलर्स के बिहाफ पे बनाएंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी खुद से कलर यूज मत करना, क्योंकि द मेजर इशू विद द एआई इज दैट एआई हेलुसिनेट मेजरली। भाई एआई के साथ सिंपल इश्यूज क्या क्या है आपके पास? अगर आप एआई यूज करते हो इन जनरल, आई गेस क्लॉड जीपीटी बहुत यूज करा होगा आपने, बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते होगे आप लोग, तो एक इशू क्या आपके एआई के साथ, भाई हेलुसिनेट करते हैं बहुत ज्यादा। आप सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछो, हर टाइम डिफरेंट आउटपुट्स होंगे, so that we call a hallucination regarding to the prompts and the what AI context. तो आपने क्या डिफाइन कर दिया? कलर पोर्शन डिफाइन कर दिया ईच एंड एवरीवन, ठीक है? नाउ विल स्टार्ट विद व्हाट, नाउ विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट द आइडिया, सो डिजाइंस, सो लेआउट, okay, not this one, theme layouts, okay, leave it. I'm not able to find any decent layouts for now. Use good buttons and shadows and hover effects and good transitions and animations, ठीक है? आपने क्या डिफाइन करा कि बटन्स डिसेंट होने चाहिए, आपके शैडोज आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है? इट शुड बी शैडो, हो इफेक्ट्स नाइस होने चाहिए, गुड ट्रांजिशंस होने चाहिए, ठीक है? एनिमेशंस पोर्शन पे आपने और डिफाइन करा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डिफाइन, आपने क्या क्या कर दिया विद माय व्हाइट बोर्ड। ये अब होम पेज, आपने सेशन डिफाइन कर दिए, कितने कॉन्टेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए पेज में, क्या फॉर्मेट होने चाहिए, ठीक है? कॉन्टेक्ट्स के सपोज डिफाइन कर दिया, सोशल डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट यू स्टार्ट विद द कोड पोर्शंस, ठीक है? तो कोड पोर्शंस पे क्या होगा? फॉर द कोड साइड, देखो अभी जो हम पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसका सिंपल बेनिफिट क्या होगा, ठीक है? ये पोर्टफोलियो आप सिंपल ऑफलाइन यूज करोगे, ऑफलाइन में अगर आपको कुछ भी अपडेट करना पड़ेगा तो आप ऑफलाइन भी यूज कर पाओगे इसको, ठीक है? जैसे आपको शो करके दिखाऊंगा अभी, इफ यू वांट टू अपडेट अ सिंपल पोर्टफोलियो, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? फॉर द कोड साइज, क्रिएट रीयूजेबल कोड,
result codes, and for the data section create a file name data or utilities. देखो अभी जो हम कर रहे हैं क्या डिफाइन कर रहे हैं कि कोड साइड पे आपको क्या होना चाहिए, कोड आपके सारे रीयूजेबल होने चाहिए, तो मल्टीपल पीस आप बहुत सारे हार्ड कोड नहीं करने वाले अपन, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपने क्या डिफाइन करा, डेटा सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब एक ही आप नॉर्मल आइडिया क्या है अभी हमारे पास, ठीक है, एक फाइल बनाएंगे उसके अंदर आपके सारे के सारे पोर्शन डिफाइन करेंगे कि ठीक है आपके सारे एक एरे बना देंगे जिसमें आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन होगा, एक पोर्शन बनाएंगे जिसमें आपके कॉन्टेक्स्ट का सेक्शन होंगे। तो आपको मल्टीपल जगह पे ना हार्ड कोड करने की जगह पे एक ही जगह सिंगल चेंज करो, आपके हर पोर्शन में चेंज होते जाएंगे, ठीक है। वेयर यू आर गोइंग टू डिफाइन द डेटा, ऑल डेटा, ठीक है। ये हो गया फॉलो गुड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बेसिक प्रॉम्प्ट अपना ये डिफाइन करा, ठीक है। अब देखो सिंपल एक प्रॉम्प्ट होता है आपके पास क्या, सो सिंपल प्रॉम्प्ट, व्हाट इज अ सिंपल प्रॉम्प्ट, लेट मी शो यू, क्रिएट मी अ पोर्टफोलियो। अब ब्रांड नाम कोई पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है, अभी के लिए आपने डिफाइन करा कि ठीक है यू हैव टू जस्ट रिवॉल्व अराउंड दिस साइड, ये कलर्स आपके होने चाहिए, एनिमेशन होनी चाहिए, ये पोर्शन होनी चाहिए, मल्टीपल आप चीज आपने डिफाइन कर दी। अब एक ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट डिसेंट स्टफ जस्ट डिफाइन दिस स्टफ, आप नॉर्मल नॉर्मल पोर्शन डिफाइन करो, ठीक है। किसी भी नॉर्मल एआई पे जाओ, सो राइट आई एम गोइंग टू ट्राई टू यूज द क्लॉड एंड जस्ट ट्राई टू व्हाट, प्लीज enhance this prompt, so right now ठीक है। सो अभी आपने क्या डिफाइन करा, जो भी पोर्शन आपने डिफाइन किया, जो भी पोर्शन अपने रिक्वायरमेंट्स थे सारे पोर्शन को हमने डिफाइन कर दिया, राइट नाउ इसको अपने कहा क्लॉड को कि भाई अब इस प्रॉम्प्ट को आप क्या करो, एनहेंस करके दो, ठीक है। सेम मेजर मेजर पोर्शंस आपके बजी वर्ड्स, आपके स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ रिमूव करके और डिसेंट पोर्शन आपका डिफाइन करके देगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपने इससे डिफाइन करा कि जो प्रॉम्प्ट्स होंगे आपके, ठीक है, इससे बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सी अभी तक मैंने एक पोर्शन, एक भी नॉट इवन सिंगल लाइन हैव रिटन द कोड, अभी तक ये पोर्शन मैंने कोड नहीं करा है अभी तक, ठीक है। ओके ओके सी दिस पोर्शन आई हैव मिस्ड दैट, द रिस्पांसिवनेस पार्ट ये मिस हो गया था मेरे से, तो अभी मेजरली पार्ट आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड व्हाट विल डू, सेम प्रॉम्प्ट को अपन कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Just give me one more second. Let me copy the prompt. Okay, cool. Now one more thing. We'll just put our prompt here. ठीक है। अब मेजर पार्ट आपका क्या है, ठीक है। फॉर द डिटेल पोर्शन इट विल जस्ट पुट रैंडम डिटेल्स, सो व्हाट विल डू, एक काम और कर सकते हो आप, ठीक है। इफ यू आर हैविंग अ सिंपल रिज्यूमे, अगर आपके पास कोई रिज्यूमे है, ठीक है, आप रिज्यूमे पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड जस्ट गिव दैट रिज्यूम टू एनी आई मीन एआई, एनी मॉडल, so it will just extract your details for the skill portion, for that each and every stuff, ठीक है। तो अभी के लिए सेम स्टफ, क्योंकि मेजर इफ यू हैव टू राइट, आई मीन वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टफ, अगर अदरवाइज आपको पूरा का पूरा पोर्शन राइट लिखना पड़ता खुद से, सो बेटर टू बी जस्ट do the whole stuff with the AI part, okay। Now on the last part we'll define the details are and paste our whole details. Right now the whole prompt is ready. Now I will try to what, push our prompt to the level. Now see it's going to start, and I guess for this month we are having a multiple credits, okay। It's going to start working, start हो गया आपका काम करना, ठीक है। जो तब तक मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ हाउ यू व्हाट्स लेवल वर्क, जो भी आपके लेवल काम कैसे करते हैं, ठीक है।
देखो इन जनरल चीज़ें काम कैसे करती हैं एट द एंड, ठीक है। एक एआई प्रॉम्प्ट है आपका, एआई प्रॉम्प्ट एकदम सिंपल सा एक डिटेल प्रॉम्प्ट होगा लेवल के बिहाफ पे भी, ठीक है। वो सेम प्रॉम्प्ट आप लेके जाता है, सपोज आपने कॉल करा बाय यूजिंग योर ओन प्रॉम्प्ट, एक डिटेल प्रॉम्प्ट आपके पास पहले से है, उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट अलग से जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है वो प्रॉम्प्ट पुश हुआ, और दोनों सेम प्रॉम्प्ट आपके साथ पुश होके गए जिस भी एआई के आई एज एन पेरेंट एलएलएम जो भी होते हैं आपके, उनके पास पुश हो गए, और वहां से जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो आपको फेच हो रहे हैं। तो नॉर्मल टर्म्स पे आपके बेसिक फॉर्मेट्स यही होते हैं, ठीक है। लेट मी सी द रेटिंग पार्ट, ठीक है। स्टार्ट हो गया आपका काम करना, ठीक है। इट विल हार्डली टेक आई गेस 4 to 5 minutes, नॉट मोर देन दैट। 4 5 मिनट्स लगेंगे आपके, 4 5 मिनट मेजरली। सो लेट अस वेट टिल दैट टाइम। जब तक ये हो रहा है तब तक चैट्स देखते हैं हम। वेयर माय चैट्स? यू नहीं यूज होगा। ओके इट्स नॉट यूज। ओके रिकॉर्डिंग मिलेगी ना भाई? रिकॉर्डिंग मैं गेस मिल जाएगी यार आप लोगों को। रिकॉर्डिंग आपकी यहीं रहेगी, इस लाइव रहेगी आपके यूट्यूब पे। क्लास इधर पार्टिकुलेट ना एवन यहाँ तक समझ में आया आपको जो भी मैंने आप जनरल ऑप्शन बताए आपको भी? ओके ग्रेट मैम, ग्रेट यार, थैंक यू सो मच। इफ आई मीन फाइंडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेट। Again, if it had built multiple components, and see if you're having, I mean, if you're in numbers of enough users or enough what views on this video, if you want, I can explain the whole video. मतलब I mean, whole the project. अगर आपके पास decent views होंगे इस videos पे, ठीक है, then if you want me to explain the whole project, I will do that. But not today. Okay, great, great, yeah, great. Okay, it has got multiple files. It is going to create the hero sections, navbar, cards, component, multiple files. Okay, let it done. Just wait for a few more minutes. Let it complete. Then we can see what it has done. Till the time we'll communicate with the. Please tell the name of the AI tool on which we are building it. It's lovable. If you want, I can share you the what. Let me connect the account so I can share the chats. Okay, no worries. It's lovable. Just write lovable. Not this one. Just write level. This is AI app builder, vibe code app. You will react to the screen. This is what we are using. अभी के लिए अपन ये use कर रहे हैं. Okay, so let us see what it had done with our level. Yeah, it is there. So I see. Same portion अगर आप बनाने जाते हैं, अगर I mean learning the whole stuff. First you have to learn React और JavaScript, CSS files and multiple stuff. नहीं और भाई बहुत चीज़ आपको अलग से पढ़नी पड़ती, बहुत कुछ. So right now what we have done, we have just tried to create with the what with the simple AI, just a simple prompts. So I guess it is done. Let us see what are the results. देखते हैं भाई क्या बनाया है इसने. I guess it is taking some time to load.
Oh, great, man, great. Very cool. I guess it has great. I mean, created done a great job. Being honest. One thing I guess it is missing with the what? One thing we are missing with the dark mode. So let me add that. Uh, add night dark mode well as light mode and the toggle switch. So I guess it is far more better than the previous one. जो मैंने दिखाया भाई उससे तो बहुत quite decent. Being honest, it is quite nice. ये तो ज़्यादा बड़े बन गया. So I guess they are my socials. Is it working? Okay, it is working. Cool. Okay, again, it is working with the dark mode. So it will take, I mean, few more minutes to add the what toggle switch for light mode and dark mode. Just wait a few more minutes. 2-3 मिनट और रुक जाते हैं फिर अपन स्टार्ट करते देखते हैं क्या बना है इसने डार्क मोड साइट पे. तो भाई कैसा लग रहा है भाई आपको ये? बढ़िया यार. सैनी, आई एम गुड. व्हाट आप कैसे हो भाई? वेल नहीं ठीक है. Okay, let me see. So it is working. Just few more minutes, then we can see what it has done. ऐसी मेजर इश्यूज आपके पास आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप डिटेल कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे हो उसको डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं दिया आपने तो आपने फर्स्ट टाइम बनाया फिर आप दोबारा हिट एंड ट्राई करोगे कि ठीक है भाई ये आई डोंट लाइक दिस स्टफ इसको चेंज करो जस्ट इन दिस पोर्शन फिर आपने इस पोर्शन को चेंज करना स्टार्ट करा सो यू हैव टू जस्ट आई मीन हिट एंड ट्रायल मल्टीपल टाइम बहुत टाइम आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेंगे सो क्वाइट हेक्टिक बीइंग भाई बहुत हेक्टिक होता है वो फिर वहाँ पे मल्टीपल टाइम इश्यूज होंगे मल्टीपल डीबग पोर्शन करना स्टार्ट होगा तो बेटर टू बी आई मीन गिव अ डिटेल प्रॉम्प्ट एक बार टाइम लगाओ प्रॉपर डिटेल इंस्ट्रक्शन दो कि भाई ये पोर्शन आपको है ये टास्क दिस इज द सिंपल रिस्पांसिबिलिटी दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ये पार्ट क्लियर अप करो बूम एंड यू आर हैविंग अ सिंपल व्हाट वेबसाइट just wait for a few more minutes let him add the dark mode then we can see guys I think this I mean the right one this portion it's quite nice I guess great I guess okay now it is working it just updated the whole CSS formats type checking the prompt okay I guess it is done now for the light mode we are having this formats and for the dark mode okay for this is for the light mode okay we're not having a good text formats okay so in our what in our dark mode so in our light mode we are having a simple issue we are not able to see the text in modes okay so what is the issue while we are switching the mode text are not visible can you switch
So it is properly because see, for the day portion it's quite nice, but for the night one, when text are still there, but the issue is that the colors are not good. Low formats are not visible. Okay, let it work. Oh, great, that is nice. Let's back to the chat side. Very attractive. Sir, can you drop the prompt in description of chat? Yes, sure, Aniket. I will drop that. सर अब तो हमें वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ना चाहिए क्या? नहीं भाई पढ़ो यार. Being honest, पढ़ो. काम आएंगे आपके बहुत. Suppose करो I will show you a simple example. So once we are done with that, जो मैं ये prompt start done कर दूंगा आपका, ठीक है? After that we'll try to just what install in just install in our GitHub, ठीक है? Local machine पे अपन अपडेट करके देखेंगे एक बार. तो आइडिया होना चाहिए आपको. यार एवरीवन देखो, according to my perspective, मेरा POV क्या है related to this AI stuff, job and all that stuff, ठीक है? पॉइंट सिंपल है भाई, जॉब्स आपकी हैं, बट इश्यूज क्या है? ओके, कर्तव्य जस्ट गिव मी अ मिनट यार, लेट मी complete the what I'm trying to explain. After that I will explain how we can. Okay, yeah, it is one of the best skill. Yeah, for the best part we have to just do some kind of decent web dev, do a little bit of machine learning stuff, how we can deploy LLMs, how we can train your own data on that LLM. So this should work. Okay, I guess my credits are over. That's why it is not giving me exact idea. No worries. I'll update that stuff later. So ऐसे till this point अभी क्रेडिट्स आपके फ्री टायर्स में इतने क्रेडिट हैं, ठीक है? और मैं प्रॉम्प्ट से आपके पुश अप कर दूंगा यहाँ पे आपके चैट्स में, आइदर फ्रॉम द चैट बॉक्स और आइदर इन द आपके कंटेंट पार्ट में डिलीवर कर दूंगा यूट्यूब सेक्शन पे. सो अभी के लिए व्हाट विल ट्राई. ओके, आई गेस वी हैव वन मोर क्वेश्चंस. यार इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मेजर इश्यूज क्या है भाई, अभी के मार्केट में ना एआई स्टूडेंट्स को भी हल्का वो अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास डिपोर्शंस का टच है तो विल हेल्प यू, बीइंग ऑनेस्ट, बहुत हेल्प मिलेगा. एंड फॉर द डिप्लॉयमेंट पार्ट आई आर फॉर द फ्रंट एंड साइड विल डिप्लॉय ऑन वर्सल. फ्रंट एंड पोर्शन आपका डिप्लॉयमेंट करेंगे हम वर्सल पे, ठीक है? गाइस सी राइट नाउ सपोज इफ यू वांट टू नाउ यू हैव सिंपल कनेक्टर्स. आपके पास कनेक्टर्स होंगे, those are writing the same code with me. We have simple connector. आपके क्लोड ये लेवल पे एक पोर्शन एक होगा सिंक करने का ऑप्शन, ठीक है? टू द टॉप पोर्शन, टॉप राइट सेक्शन, जस्ट क्लिक दिस बटन एंड कनेक्ट टू द गिटहब. जस्ट कनेक्ट. इट विल टेक सम टाइम. अगर आपका गिटहब बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर लो उसको एक बार, फिर जस्ट सिंक द होल कोड. ओके, आई गेस इट इज कनेक्टेड. Let me check my GitHub. Let's see. Digital canvas. Yeah, I guess it is connected. Yep, it is. ठीक है, तो आपके लोकली आपके गिटहब पे पुश हो गए, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डिप्लॉय टू द लाइव सेक्शन. आप इसको डिप्लॉय करेंगे. अब हम स्टार्ट करेंगे डिप्लॉयमेंट करना. कहाँ पे? लाइव पे, जो लोकली की जगह पे, हर जगह पे आप कहीं पे भी इफ यू वांट व्हेनेवर यू कैन ओपन द वेबसाइट एंड शो इट एनीवेयर, कहीं पे भी आप जाओ, किसी को भी दिखा सकते हो आप, ठीक है? फॉर दिस वी हैव वर्सल. वर्सल है फ्री डिप्लॉयमेंट टूल फॉर फ्रंट एंड साइड. वर्सल आपका फ्री डिप्लॉय करता है आपके फ्रंट एंड पोर्शन पे. सो हाउ वी कैन डिप्लॉय एनी प्रोजेक्ट टू आवर वर्सल? Just click to the add new project. Now this add new project, and next you have to just import from the GitHub. My GitHub is already connected. आप एक काम करो, अपने GitHub को कनेक्ट कर लेना. We are having a multiple option how to connect your GitHub. आप कनेक्ट कर लेना either from the Git or Git bash,
and just import the project. And after that, we are having the simple project. You don't have to do anything. Okay, majorly just click on the deploy button. It will take some time. I guess थोड़ा बहुत time लेगा majorly. And after that, it will deploy. Just wait for a few minutes. It is building some kind of logs. And after a few minutes, it will deploy to live. And once we're done, once we have deployed, we can check our link whenever you want. Okay. I guess it will hardly take 1 or 2 minutes. Sir, in email, what are necessary skills to have knowledge about it for high level perspective? Okay. या जुनैज देखो एआई स्टफ के लिए रिलेटेड पहले तो आपको मेजरली आपको पाइथन पोर्शन आने चाहिए, थोड़े बहुत डिसेंट पाइथन आने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर आपके वहाँ से बिल्डअप स्टार्ट होते हैं। आप पांडा स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे टेंसरफ्लोस पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद आप इनके कोर एल्गोरिथम्स में स्टार्ट करोगे। फिर आप डेटा ट्रेन करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, वेक्टर्स कैसे काम करते हैं, वेक्टर डीबीज क्या होते हैं, रैक्स क्या होते हैं, खुद के मॉडल्स कैसे ट्रेन करके आप पुश कैसे करते हो डेटा में, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको स्टार्ट करने पड़ेगा धीरे धीरे, वन बाई वन। तो मतलब फ्लो आपका थोड़ा सा है फॉर डिटेल, अगर आपको डिटेल वो चाहिए रोड मैप तो वो भी हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट वेबसाइट? या वेबसाइट इज क्वाइट नाइस। देखो करंटली आई एम अ मंथ स्टैक डेवलपर। मैंने मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो मंथ से स्टार्ट हुआ था मेजरली। तो मैंने रिएक्ट पढ़ा, फर्स्ट फर्स्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ी, फिर रिएक्ट पढ़ा, उसके बाद फिर नोड पढ़ा, आई गेस बैकएंड पोर्शन में स्टार्ट किया। तो वो वन बाय वन स्टार्ट होते गए। बट सिंपल बेनिफिट क्या है? जस्ट स्टिक टू वन सिंपल टेक्नोलॉजी। एक टेक स्टार्ट करो, किसी एक टेक को एकदम तरीके में पढ़ो, बहुत डिटेल पढ़ो, बहुत जितना पढ़ सकते हो। डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दो उसको प्रॉपर। अगर आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम सर्टेन टाइम दिया है तो उसका अगर आपको स्विच करना हो, सपोज करोगे अभी आपको रिएक्ट आता है, कल को अगर आपको शिफ्ट करना होगा किस पे, पाइथन फ्रंट एंड आपके पाइथन साइड पे करना होगा, या फिर किस पे, किसी भी एजम्पशन ले लो, एंगुलर सपोज कर लो अभी के लिए, या व्यूजेएस पे सपोज कर लो। तो कॉन्सेप्ट्स आपके सिमिलर होते हैं। मेजर पार्ट अगर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो आप मेजरली आप क्या चेंजेस करोगे? थोड़ा सिंटेक्स पार्ट होगा। सर कैन यू गाइड मी फॉर द रोड मैप? यार हाँ, आई कैन गाइड यू फॉर दैट, बट अभी तो यार नहीं हो पाएंगे। बट मुझे विल टेक अनदर सेशन, विल जस्ट गाइड ऑन दैट साइड। Okay, let me see. Is it done? Okay, our bill logs are done. Okay, abhi is it deployed? I guess it is deployed. Let's see. Yeah, it is deployed, I guess. Just give me 1 second. Let me share that to the live window. Let me share the chats. Just give me guys 1 minute. I'm sharing in the chat box. Just 1 minute. I'm sharing the link in the chat box. If you want, you can see that from there. I guess. Yeah, it is visible. I guess I've shared it. Yes, some of my team have shared it. Okay, you can check it. One of my team members have shared the link, live link. Or if you want, I can share the prompt also. Just give me 1 second. Let me share the prompt itself. Not this one. Let me share the prompt itself for better understanding. Class, 1 more minute. Let me share the prompt itself. It is taking some time, I guess. I am trying to share the prompt. Agar if it's not up to the limit, it will send. Otherwise, किसी और मेथड से हम शेयर कर देंगे आपको ग्रुप पे, ठीक है। हाय सर, हाय आतिफ। Yeah, okay, so I guess it is cool. So now see, let me give a simple idea about what. Suppose where is our level? So right now, this is the code format. What we have created, what your level, what level has created for you. This one is the code format. So there are multiple files.
नाउ सी, लेट मी गिव सिंपल आइडिया अबाउट द गिटहब फॉर्मेट, ठीक है। एक सिंपल आइडिया लेते हैं। सपोज करो अभी के लिए आपने प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। नाउ कल को अगर आपको कुछ अपडेट करना है, जस्ट सिंपल स्टफ, जस्ट सिंगल लाइन अगर आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो बेसिक जो आपने पुश करा है कोड को, ठीक है, जो भी आपने पुश करा, कुछ भी जो भी पुश करा आपने, ठीक है, so what we have to do, either will just clone the website, clone the repo. It will hardly take, I guess, what, 1 or 2 minutes. Let me do that. Where are we? Where is my stream? Let me add my screen. Just a second, guys. Let me add a screen. Let me show my entire screen, otherwise I'm not able to share you this. Yeah, I guess my screen is visible to you. Let me check. Class, is my screen visible? No, it's not. Let me share my screen, entire screen. Okay, what kind of product should we add to our rhythm to enhance it? Some say product should be unique, then how we are any also will making a clone of a site and enhance rhythm out. Yeah, Kartabh as well. See, for the product side, आप एक decent product बनाओ, clones भी चलेंगे, but major part जो भी अगला बंदा देखता है, suppose I'm your recruiter, ठीक है, तो one thing I am going to see कि आपने इसमें अलग से क्या add on करा है, being honest. Vishal, I'm not able to present screen. Can you please make me host on that side? Yeah, sure. Yeah, thank you. I guess my whole screen is visible, na, Evan? Yeah, it is, I guess. Thank you. Thank you, Yes, Vishal. yes, it is visible. Thank you. Sorry for the delay. So now see, suppose this is what we have done. This is a simple project what we have created. अगर if you want to, I mean, just make a simple changes, आप क्या करो, simple for the code format, GitHub पे जाओ, इस code format का clip, I mean, copy करो, and in the GitHub, what you have to do, just create your terminal. Next, what we'll try to clone our project, ठीक है. Now what you have done, we just clone our whole project to our local machine, and we'll try to just what move inside our project. Now see, suppose करो, take a simple example. I'm not going to, I mean, go in that deep, बहुत deep नहीं जाएंगे भाई अपन, ठीक है. Suppose if I have to change the Swaraj dot to Swaraj Anand, ठीक है. सिंपल आइडिया भाई, बहुत कुछ नहीं है. फ्रॉम स्वराज टू स्वराज आनंद करेंगे अपन, ठीक है, या फिर एनी assumptions, कुछ भी आइडिया ले लो अभी के लिए, कुछ भी चेंजेस करते हैं, माइनर चेंजेस करेंगे, ठीक है. So from the data portion, we are having a portfolio data there, ठीक है. So what
मेरा डेटा है, दिस इज द मेरा डेटा व्हाट यू हैव डन. ये क्वेश्चंस आपकी डिटेल्स हैं. होम एंड होम. आई एम स्वराज, अ वेब डेवलपर, a full stack web developer. Okay, so I just have to find the simple stuff where it has created, where it is. Let me copy the stuff, let me find it. Okay, let me global find that. Okay, I'm not able to find it right now, but see, suppose if I have to change it anywhere, it shouldn't be example, it should be, is it showing example? Yeah, it shouldn't be swarad.online. I have to change the example, I mean email. I'm going to replace the example email with my original one. Okay, cool. And I don't want our my number, so it should be okay. Cool. So what I've done, I've just updated a simple idea, just update a simple detail. So I will try to check what, I'll first try to check what you've done. So when the simple GitHub stuff. So suppose if you want to update a simple idea, if you want to update whatever, if you want to update whatever you have changed. So first we'll check git status. So you have modified what the portfolio data.js. अभी के लिए आपने क्या करा है, मॉडिफाई करा है पोर्टफोलियो डेटा डॉट जेएस. ठीक है, उसको ऐड करो, गेट ऐड एंड डॉट गेट कमिट हाइफन एम. ज़्यादा सिंपल कमांड्स, 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे. अपडेटेड डेटा एंड जस्ट पुश द फाइल. सो वंस यू पुश दैट, ठीक है, जस्ट आपने पुश करा अभी के लिए. एंड विल ट्राई टू मूव द गिटहब पार्ट, गिटहब में जो आपने ऐड करा था. ठीक है, विल ट्राई टू रिफ्रेश आवर पेज. ठीक है, सो अभी के लिए वी जस्ट आई मीन डन अ सिंपल कमिट. हाउ वी कैन चेक द कमिट्स? सो दिस वन इज द कमिट बाय मी स्वराज आनंद, अपडेटेड डेटा. ठीक है, जस्ट अभी कमिट करा हम लोगों ने. ठीक है, now it will take hardly 2 or 3 minutes time to deploy the updated changes. We'll just move back to the browser side. तो जो चेंजेस आपने अभी जस्ट करे हैं, जो आपने गिटहब पे पुश करे हैं, so by default it will take some time. ठीक है, 2-3 मिनट टाइम लगेंगे इसको अपडेट होने में. ठीक है, it will just try to redeploy the whole stuff, the whole website, and just update it with the latest changes. So we'll check again. Okay, it has, I guess it is done. So let me check what we have done. We have changed the email, na? So yeah, our email is changed, and we have updated phone numbers also. ठीक है, cool guys. So suppose if you want to update any stuff, अगर आपको कुछ भी locally change करने होंगे, just clone the repo, locally change करो, just push करो, 3 lines of code, and after that, तो इसलिए मेजरली भाई हर चीज़ आप AI पे डिपेंडेंट मत करो. अगर आपको बेसिक गिटहब्स आते हैं तो you can do a lot of stuff. ठीक है, so I guess we are done. Okay guys, I guess we are done. Thank you everyone. Thank you for joining. We'll start with the question side, question section. 2-3 मिनट अपन क्वेश्चंस लेते हैं. If you want to talk, we can do that stuff. Otherwise, we can end the session. And thank you so much, guys. Everyone, crazy हो गया सर. अरे thank you यार. Great यार, great. Thank you for joining, guys. And we'll wait 1 or 2 minutes. If you're having any questions, if you want to speak, if you want to talk, otherwise we can done with the session. Roadmap, sir. Yeah, we will done the roadmap. Junaid, definitely we'll do that. Thank you, thank you for, and I mean thank you for the support, guys, everyone. And definitely, Junaid, definitely we'll create our roadmap also for the ML side. Vishal, if possible, can you note that stuff? We have to just create a roadmap Yeah, for the. sure. Yeah, I have already noted like whatever our students are requesting. So we will definitely bring new sessions in the upcoming weeks. Cool, yeah, cool. Okay, guys, thank you so much, guys, everyone. Great to see you. So thank you so much, Swaraj, for such an insightful session. Like Hmm. I'm sure students have gained something new, something valuable throughout this session to build a great portfolio within certain minutes, like using some AI tools like Lovable. Yeah. So that's all for today, guys. Thank you so much for joining us, and we'll hope you see you again in the coming sessions. That's all from my side. Thank you so much. Good night. Bye Okay. bye.
Bye bye. Bye bye, Vishal. Great day. Bye. Yeah. Thank you.